Hello everyone, I'm Shivangi Agrawal, your law mentor, and here I am with 6 very common mistakes that students do while studying law, and you have to be very cautious and careful about it. The very first one is studying in bed. Although this may sound very simple and lame, but you have to understand this. Just like it is difficult to be friends with your ex, it's extremely difficult to study in your comfort space in your bed because it will always distract you, it will always remind you of the comfort and sleep. Though you should not be studying any subject in that comfortable space, law learning becomes way more difficult because I am sure you'll agree on this कि नींद आना यहाँ पे उसके chances बहुत ज़्यादा होते हैं in comparison to other subjects. So avoid that. You must avoid that. The second one is not studying regularly. क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके घर में डेफिनेटली हो सकता है कि कोई पेट हो या हो सकता है आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, चाइल्ड हो, राइट? क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि 10 दिन आपने उस पर्टिकुलर पेट को खाना नहीं दिया, उस पर्टिकुलर पेट को टाइम नहीं दिया, एंड आफ्टर 10 days अगेन यू आर फ्री फॉर 10 days, तो आपने कहा अब ये अगले दिन तो पूरी तरीके से तेरे हुए, सो फुल डेडिकेशन के साथ होल हार्टेडली यू हैव गिवन दोज 10 days टू द पेट, टू द चाइल्ड, क्या चाइल्ड या पेट ग्रो करेगा? नो, because they need everyday attention. Law is a subject, my dear, that you have to nurture and groom like a child every single day with no exception. The moment you break your continuity, it will again be more demanding. So read, revise, write, repeat. Simple. The next one is not solving law answers. Now, when I say law answers, not solving, you don't have to spend your entire life in writing law answers because I know it's tiresome, it's difficult. You don't have to write 100 answers. Just check if you can write an answer with the provision you know. What am I saying, ma'am? What are you saying? See, often students confuse themselves. उनको लगता है कि उनसे लिखा नहीं जा रहा है, जिसमें 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे एक्चुअली जिनको लॉ याद ही नहीं हुआ है. When you haven't learned a particular provision, you will never be able to deliver that on paper. See, you don't need fancy presentations, you don't need anything fancy. You should just be able to justify your knowledge by your presentation. So if you have knowledge, there are 90% chances you'll be able to justify it and put it on paper as well. सो पहली बात ये होती है कि आपको याद करना ज़रूरी है. ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैम लिखना नहीं आ रहा है, पर ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि बच्चे को बहुत अच्छे से प्रोविजन याद है. ही नोज ऑल 4 points ऑफ द प्रोविजन बट इज अनएबल टू राइट दोज 4 points. इफ यू लर्न दोज 4 points, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू राइट इट. हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट दैट डजंट कट योर मार्क्स इन अ लॉट of disastrous manner, I would say. Right, having said that, एक again problem ये आती है, the fourth problem, that students try to learn the entire content. 100% कंटेंट अगर आप लॉ का याद करने जाओगे तो यू विल विटनेस द फर्स्ट फेलियर इन योर माइंड इटसेल्फ. पहले पहले दिमाग ही हार जाएगा, बोलेगा नहीं हो सकता ये, और एक्चुअल में नहीं हो सकता. मे बी 5-6 बुक्स और मे बी अ स्टडी मैट ऑफ 500-600 pages, it is next to impossible to learn the entire book. Having said that you have a vast syllabus not just in law but you have other subjects to cover as well, right? तो मैम ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो करना ये है, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट टू लर्न, एंड टू फिगर आउट व्हाट टू लर्न व्हाट यू हैव टू डू इज यूज अ हाइलाइटर और प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स. Fine, or take some short notes if you haven't done that. So you should be knowing that what is the core content, what are the keywords that I must learn. See, whenever you read law, the first reading has to be like a novel. आप जैसे novel पढ़ते हो ना, when you're reading a fictional story, you don't miss any point. आप हर एक चीज को, हर एक स्टेप को समझते हो. Why? Because otherwise you'll not understand the whole story. Law is like a story that you have to understand completely. Only then you will enjoy the process. But after that, you don't need to retain all the details in your mind. You can just retain some keywords, some important and core provisions. Right? So every provision, the core content that you have to remember. Fifth is studying without targets. क्या आपको ऐसा लगता है, इनफैक्ट अगर आपने टारगेट नहीं बनाए ना, यू विल ऑलवेज फील अरे यार अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अरे यार मुझे लॉ में बहुत डर लग रहा है, अरे यार जब पढ़ा था तब तो सब समझ में आया था बट अब लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है. तो ये आपके साथ हमेशा होगा अगर आप टारगेट्स नहीं बनाओगे. लॉ में टारगेट शीट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. छोटे बड़े दोनों आपके टारगेट्स जो होते हैं ना, यू मस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. आप एक 3 टेबल वाला बनाओ, डेट लिखो, चैप्टर लिखो, टॉपिक लिखो और उसके आगे टिक या क्रॉस करना. ठीक है, आपने
एक दिन पहले, सपोजिटली टुमारो इज 7th एंड आज आप 6th को बैठते हो एंड 6th को आप लिखते हो कि कल मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये पर्टिकुलर टॉपिक करने वाला हूँ, से फॉर एग्जांपल कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्शन में आई एम गोइंग टू डू दैट फॉरेन कंपनी. सो आपने चैप्टर का नाम लिखा, टॉपिक का नाम लिखा, एंड द वेरी नेक्स्ट डे, apart from meeting other targets or other big targets or whatever you have, आपने ये छोटा सा टारगेट अचीव किया, put a tick mark. So this validation will give you immense confidence and it will help you track your progress. और हमेशा क्या होगा, आपका लॉ आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. And the last, but definitely not the least, because this is the biggest mistake that students do, they revise law. Ma'am, we don't have to revise law. No, you have to recall law. आपको कभी भी लॉ रिवाइज नहीं करना है. मान लो हर किसी के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं, मे बी समवंस बर्थडे, मे बी समवंस फोन नंबर, मे बी एनीथिंग, राइट. तो अगर आप उसको देखोगे, इफ़ यू लुक, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड इफ यू लुक एट इट, यू विल बी लाइक अरे हाँ ये तो पता है, बिकॉज यू फाइंड इट फेमिलियर. वैसे ही आप लॉ को जब रिविजन करते हो ना, तो आपको सारी चीज़ें फेमिलियर सी लगती हैं व्हेन यू आर रिवाइजिंग. हाँ हाँ ठीक है, ये हो गया हो गया हो गया, एंड वी फील दैट वी हैव रिवाइज्ड द एंटायर कंटेंट. नो माय डियर, इफ़ यू क्लोज द बुक, इफ़ यू टर्न क्लोज द पेपर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना ये मेरे दिमाग में रिटेन रहा है. सो जो आपके दिमाग में रिटेन हुआ है उससे आपको रिकॉल करना है. सो वेन एवर यू want to revise law, don't actually revise it by looking at the book, but actually recalling what you have learned. So when you look at the book, look at a particular provision कि हाँ ये टॉपिक है, ये सेक्शन है, what are the contents therein. तो आप ऐसे आप आंख बंद करके अपने माइंड में रिकॉल करिए, एंड देन यू कंपेयर what important points have I missed. That will actually be helpful. Hope you find the video helpful, and all the ones who are watching this particular video and haven't subscribed my channel yet, please subscribe. Stay connected. Thank you everyone. Take care.